Welcome back in lecture number 22 of statistics. In my previous lecture, we have discussed about how to estimate the difference between two population means. In this video, I will tell you how to estimate the difference between two population proportions. If you liked my lecture, please share it, subscribe my channel for more new videos on statistics. Thank you very much. So, suppose we have a problem where we wish to estimate the difference between two binomial parameters, P1 and P2. You know about binomial parameters? Let me recall you. If you repeat a trial n times and suppose a particular characteristic occurs x1 times, so that proportion of characteristic in n trials, that is x1 upon n, is called the binomial parameter P1. And if you suppose perform another experiment n times, you repeat the n trials of that experiment n2 times. n2 times, and suppose the particular characteristic occurs x2 times, and the proportion of that characteristic will be x2 upon n2. That is called P2, binomial parameter. So binomial parameter is the proportion of the particular characteristic when we repeat some experiment n number of times. So suppose we wish to estimate the difference between two binomial parameters. For example, P1 might be the proportion of smokers with lung cancer, and P2 be the proportion of non-smokers with lung cancer. And the problem is to estimate the difference between these two proportions. This P1 is population proportion. Means population में smokers का proportion P1 है जिनको lung cancer है, और non-smokers जिनको lung cancer है उनका proportion P2 है. We want to estimate the difference between these two proportions. So first we select independent random samples of size n1 and n2 from two binomial populations with mean n1 p1 n2 p2 and variances n1 p1 q1 and n2 p2 q2. Recall that for binomial distribution with parameters n and p, its mean is np and variance is npq. So using that concept, if we have two binomial populations with size n1 and binomial samples, right? Random samples of binomial populations from binomial populations, and mean of such population with parameter n1 and p1 is n1 p1 and variance is n1 p1 q1. And for the second sample, variance mean is n2 p2 and variance is n2 p2 q2. Now we want to determine the numbers x1 and x2 of people in each sample with lung cancer. अब उस sample से आपने वो people count किए स्मोकर और नॉन स्मोकर में जिनको लंग कैंसर है, तो वो सपोज x1 x2 मिले, तो प्रोपोर्शन हमने देखा सैंपल्स में स्मोकर्स का और नॉन स्मोकर्स का विद लंग कैंसर ये है p1 कैप p2 कैप. तो ये सैंपल का प्रोपोर्शन है. हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, हम पॉपुलेशन में से लंग नॉन स्मोकर और स्मोकर को काउंट नहीं कर सकते विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई वी प्रेफर सैंपलिंग. तो सैंपल किया हमने, तो सैंपल से हमने प्रोपोर्शन देखा नॉन स्मोकर्स का और नॉन स्मोकर्स का, ये मिला. तो हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम
किससे एस्टिमेट कर सकते हैं? द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रपोर्शन से, दैट इज P1 कैप माइनस P2 कैप. So this is the point estimator for the parameter P1 minus P2. Therefore, the difference of sample proportion will be used as a point estimator of difference between two population proportions. Now, from central limit theorem, sampling distribution of difference between sample proportions. अब ये तो हमने दो सैंपल्स लिए थे पॉपुलेशन से. अब आपके पास अगर दो पॉपुलेशन हैं, उन दोनों पॉपुलेशन से आपने अलग अलग सैंपल्स लिए, फिर उन सैंपल्स का आपने प्रपोर्शंस कैलकुलेट किया, दोनों का अलग अलग, एक ग्रुप का अलग और दूसरे ग्रुप का अलग. तो एक ग्रुप में मान लो 10 सैंपल लिए आपने, 10 सैंपल का प्रपोर्शन कैलकुलेट कर लिया. फिर दूसरे ग्रुप में आपने 12 सैंपल लिए, उस 12 के 12 सैंपल्स का आपने प्रपोर्शन कैलकुलेट कर लिया. एक ग्रुप आपने लिया है पॉपुलेशन नंबर 1 से, दूसरा ग्रुप हमने लिया है पॉपुलेशन नंबर 2 से. Now we find the difference between the proportions of two groups. That means each proportion of one group will get subtracted from each group of proportion of second group. In this way, we have list of difference between the sample proportions. And this distribution approaches to normal distribution when the sample size is large, according to central limit theorem. So central limit theorems, from central limit theorem, sampling distribution of difference between sample proportions is approximately normally distributed with mean is P1 minus P2, where P1 is population proportion from first population, P2 is population proportion from second population, and variance P1 Q1 upon N1 plus P2 Q2 upon N2. So the value of Z will be, this is our statistic and this is the parameter. P1 cap minus P2 cap minus P1 minus P2 divided by standard deviation P1 Q1 upon N1 plus P2 Q2 upon N2. आपको ये तीन चीजें याद रखनी है हर एस्टिमेशन में. जो भी आप पैरामीटर को एस्टिमेट करें, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या है, और एक बार जब आपको उसकी शेप पता लग जाएगी, फिर आप उसका मीन और वेरिएंस पता कर सकते हैं. तो ये आपको फॉर्मूले सारे मेमोराइज करने पड़ेंगे. So large sample confidence interval for the difference between two population proportions will be this. This is 100 into 1 minus alpha % confidence interval. Okay, and Z alpha by 2 is the value of Z such that the right hand side area, that is area in the right tail of this value, is alpha by 2. So let's see one example. A certain change in the process for manufacturing component parts is being considered. Samples are taken under both the existing and new process so as to determine if the new process results in an improvement. If 75 of 1500 items from the existing process are found to be defective and 80 out of 2000 items from the new process are found to be defective, find 90% confidence interval for the true difference in the proportion of defectives between the existing and the new process. The question says that we have two process, एक ओल्ड प्रोसेस है और एक नया प्रोसेस है. जो कि ओल्ड प्रोसेस में कुछ चेंज किया गया, उसे नया प्रोसेस का नाम दिया गया.
और उन दोनों से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया, तो ये देखा गया कि ओल्ड प्रोसेस से 1500 में से 75 आइटम्स डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हैं और नए प्रोसेस से 80 आउट ऑफ 2000 आइटम्स डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये प्रपोर्शन है सैम्पलिंग का, सैम्पलिंग ऑफ 1500 items for the first process and sampling of 2000 items for the second process. अब हमें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोसेस, पूरी पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पर P1 P2 ट्रू प्रपोर्शन मान लिया डिफेक्टिव्स का है एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोसेस से। P1 कैप हमें गिवन है, P2 कैप भी गिवन है। पॉइंट एस्टिमेट इस डिफरेंस का ये होगा, डिफरेंस बिटवीन सैंपल proportions. Value of Z for 90% confidence interval is 1.645. Substituting these values in this formula, we have the answer. So you can simplify this. Okay. Here it is a practice problem which you can try by yourself. 10 engineering schools in the United States were surveyed. The sample contained 250 electrical engineers, 80 being women, 175 chemical engineers, 40 being women. Compute a 90% confidence interval for the difference between the proportion of women in these two fields of engineering. Is there a significant difference between the two proportions? 10 engineering schools यूनाइटेड स्टेट में सर्वे किए गए हैं, तो 250 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में देखा गया कि 80 विमेन थी और 175 केमिकल इंजीनियर्स में 40 विमेन थी। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शंस ऑफ वुमेन इन दीज टू फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, यानी एक फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, दूसरा फील्ड है केमिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों फील्ड में ट्रू प्रपोर्शंस के लिए डिफरेंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है। मींस हमें P1 माइनस P2 के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है, वेयर P1 इज ट्रू प्रपोर्शन ऑफ women in electrical engineering and P2 is true proportion of women in chemical engineering. Okay. Thank you very much.